जीएसटी मतलब हर एक सप्लाई के ऊपर टैक्स है। कॉफी सप्लाई किया था उसके ऊपर भी टैक्स, सेल के ऊपर नहीं है। तो इज दिस टैक्सेबल? वो कॉफी दे रहा है सबको, टैक्सेबल हो गया। एनी सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इज टैक्सेबल, right? If the supply is without consideration, it is not taxable except in the specified circumstances. There are specified circumstances that matters to be treated as supply without a, where the transaction is without a consideration, right? So only those specified transactions will become taxable. वरना बोलेंगे अरे यार सर ने बोला सप्लाई है, जो सप्लाई किया सबके ऊपर टैक्स लगा दो, right? So that is not the case. Now I am sending goods on approval. I have a customer. Today also people are doing that way. आज माल भेज दिया भाई, तुमको ठीक लगेगा तो पैसा देना वरना मत देना, किरण गुप्ता जी राइट. सो वी मे सेंड द मटेरियल ऑन अप्रूवल बेसिस. सो विल इट हैपन कि मुझे वही टाइम पे टैक्स लगा देना है? उसने नहीं लिया तो क्या, राइट? सो देयर आर प्रोविजंस दैट इफ सच गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, if they are actually approved, the bill is to be made on the date of approval of those goods. If the approval does not come within 6 months, then the tax automatically becomes payable at the end of 6 months. You will have to prove that on this date I have dispatched the goods. This is the LR copy. I have dispatched on this date on approval basis, right? So you have to prove if you are going to say that the goods have gone on approval basis. You cannot say कि आज मैंने माल दिया और मैं बिल 6 महीने के बाद बनाऊंगा, पैसा भी नहीं आएगा तब तक. See, under GST there is a concept of time of supply. Point of taxation rules, those who have seen excise, the service tax law, they know there is a point of taxation. The point of taxation under service tax, what is the point of taxation? Can anyone say? Mahendra, point of taxation, service tax, point of taxation. Huh? Yes, whichever is earlier. So either I receive the payment first, or date of invoice, or providing of service. Okay, I may provide the service, but I may make the invoice. Bill बाद में बनाता हूँ, उसके लिए भी time limit है 1 month. Within 1 month I have to make the invoices, right? Under service tax. So similar provisions are coming under the GST for goods also. This were not there. So if I have received the payment, my liability to pay tax arises if I receive the advance. सर्विसेज में एडवांस के ऊपर सर्विस टैक्स आज भी लगता है, राइट? सो अगर आप बोलेंगे कि भाई मैंने अप्रूवल पे भेजा है, 6 महीने के बाद मेरा अप्रूवल आया, मैं टैक्स तभी भरूंगा, वैसा नहीं है. पेमेंट कभी आ रहा है, अल्टीमेटली हैव यू गॉट द पेमेंट और नॉट. इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड अर्लियर इट बिकम्स लायबल टू टैक्स. तो एडवांसेस के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल है, राइट? एंड द टाइम लिमिट गिवन इज फॉर 6 months.